Dear student, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arafat mujeeb from FEI Higher Secondary Institute. Today is my lecture about the chapter number 6. Chapter is food production and management, and in this lecture I will go to discuss the topic improvement of crops. How we can improve crops, what are the various means and ways to improve the crop production. First one is in this chapter food production and management, improvement of crops, that is plant breeding. How we can improve plant breeding. Plant breeding में क्या होता है? We give to the by means of plant breeding. It is one of the way, that is by means of cross. We prefer to do the cross breeding. Cross breeding, it has a term hybridization. That here we prefer to have cross breedings, between the different varieties of plants in order to yield better crop, disease resistant, healthy crop, free from any diseases, and take less time to growth and have high yield, high production by that type of crop. It is the so that we give the preference of hybridization. In this crossing different varieties of plants, varieties of plants, in the concept of hybridization. That means we have a preference is given. We take a different variety of plants of one species and another related species, which have good qualities, and we mix up the qualities of different plants in order to yield one plant with in a wholesome betterment and wholesome rich yield in production. That means here in hybridization, cross breeding, and by means of cross pollination, it is an important economic. Have a cross pollination, have a different by that means one flower is pollinated by another pollen grain of another flower. Here in this plant breeding, we have a term emasculation. In an emasculation, what we perform, we in a flower, हम इस मेथड में क्या कहते हैं, हम we take a flower, और इसमें हम इस फ्लावर में हम रिमूव आउट करते हैं, रिमूव आउट स्टेमन. हम उस फ्लावर के स्टेमिनस निकालते हैं हम, ताकि stamen is a male part of a flower which bear pollen grains in the anther part of stamen. that उसके pollen grain से हम उसको self pollination को avoid करते हैं. यहाँ उस flowers में जो stamen part होता है, ये मान लीजिए फ्लावर पार्ट है, दिस इज अ फ्लावर पार्ट, ये बीच में स्टिग्मा होता है, ओवरी होती है, जो यहाँ पे ये जो है this is the male part, it is known as the stamen. ये stamen part होता है, यहाँ पे ओवरी है, पेडिसल है, ये जो पोलन ग्रेनस होता है. दैट मीन्स हम इस चीज को जो पोलन, ये stamen है, मेल पार्ट जो है, इसको हम रिमूव करते हैं. वी आर रिमूविंग. The practice of removing of stamens in a flower is known as emasculation. ताकि यहाँ अच्छा खासा क्या हो, then we perform this cross breeding. हम क्या करते हैं, we prefer to have a pollen grains of another flower and dust over the stigma. It is a female part, stigma, style, ovary, or in a ovary there contain the ovules. आपने पढ़ा होगा flower part में 7th class में, ovules that में eggs इसमें होते हैं, वो उसको फर्टिलाइज करना है. तो हम जो पोलन ग्रेन है इस पे
dust करते हैं, we dust pollen grain on the stigma part, then it is a style part. This is the female part. This is the female part in a flower, female part in a flower. And इसमें जो egg है इन्हीं को fertilize करना है क्या by means of cross breeding. Yes, this is known. Then the process of hybridization can be operated if you, अगर आप पहले इसको क्या करोगे in the flower, you are applying the emasculation. Emasculation में क्या होता है? There is a removal of stamens so that they should to avoid the chance of the self pollination by the same pollen, same egg fertilization does not take place. We prefer another pollen grain in order to have a better yield, to have a hybrid. आपने नाम सुना होगा oftenly supplied by the horticulturists, hybrid crops by means of this setup and by means of this setup. This is the plant breeding. We get a better yield of crop. Then we cultivate this type of crop in fields. Now second is in the improvement of crop. Second one is to improve the crop yield. Second one is the soil improvement. Soil, क्योंकि हमें पता है soil improvement, हमें पता है soil play important role in the development of crops. क्योंकि जो crops होते हैं they grow by the soil. First of all we sow the seed, then it develops into saplings, then saplings develops into a crop with high yield. Therefore the importance we should have a better soil. We should improve soil. How we improve the soil? There are some scientific practices. Here is the soil improvement. You know the crop. There is a crop rotation. In a crop rotation में क्या होता है? One crop type is replaced by another crop type. क्या होता है इसमें? जो एक crop type होता है इसमें one type of crop first it is replaced by another crop type. इसको हम कहते हैं crop rotation. हम in the same piece of land, in the same piece of land, in order to enrich the soil, properly. उस soil को enrich करना है, enrich the soil properly by nutrients. क्या होता है इसमें? ध्यान दीजिए, crop rotation it has advantage that if you have a piece of land and you continuously sow one type of crop, there is a deficiency in nutrients. Nutrients की deficiency होती है, खास तौर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है. लगातार एक ही क्रॉप को लगाना, लगातार एक ही क्रॉप को प्लांट करना, कल्टीवेट करना in a same piece of land, so that you should have a better choice, you should have a better opinion towards the improvement of soil, that we can nourish, we can replenish. हम कहते हैं replenishment of the nutrients. The word is the replenishment of nutrients. Replenishment of nutrients is possible because of the soil, because of the crop rotation. So nutrients can be replenished. Nutrients can be made available in the soil if we give the preference of crop rotation. For example, if we first sow the wheat, अगर हमने इसी एक same piece of land में क्या लगाया हमने, if in the same piece of land we are going to sow wheat and maize. हमने क्या लगाया पहले? इस पे हमने एक क्रॉप लगाया wheat या maize, इसमें हमने कल्टीवेट किया है. Then it should be alternate with
it should be alternate with plus ground nuts. Then there should be second one is, then this type of first crop should be replaced by the second type of crop alternatively, because जो ground nuts है ये माना जाता है when wheat and maize they need rich supply of nutrients for their growth and development. ये अच्छा खासा nutrients जो नाइट्रोजन लाइक न्यूट्रेंट जो होता है वो ज्यादा यूटिलाइज करते हैं वीट और मेज क्रॉप जैसे. और जो ग्राउंड नट्स है आपने पता है लिग्यूमिनस प्लांट्स आर they make the soil enrichment with nitrogen. They make the soil rich in nitrogen by means of nitrogen cycle. लिग्यूमिनस प्लांट में आता है ग्राउंड नट्स. ग्राउंड नट्स क्या करता है, जो सॉइल इससे पहले डिफिशिएंट रहा है, क्रॉप फर्स्ट से डिफिशिएंट रहा है न्यूट्रेंट से, आप उनको हम वापस एनरिच कर रहे हैं बाय कल्टिवेटिंग शबाश अनदर क्रॉप, दैट इज द बाय कल्टिवेटिंग द ग्राउंड नट्स will enrich the soil with nitrogen like nutrient. So this is a crop rotation. One crop is rotated by the another type of crop, that means it has capability of supplying nitrogen to the soil, and these are the consumer of nitrogen in the soil. ताकि नाइट्रोजन डिफिशिएंसी ना रहे सॉइल में, इस न्यूट्रेंट की डिफिशिएंसी ना रहे, उसको वापस रिप्लेनिश करना, उसको वापस एनरिच करना है सॉइल में, और सॉइल को बेटर बनाना है फ्यूचर क्रॉप के लिए, नेक्स्ट क्रॉप के लिए. Therefore we should go the crop rotation in an alternative way. If one crop is utilizing any specific type of nutrients, then another crop, दूसरा क्रॉप हमें लगाना चाहे उसी जमीन में जो वो न्यूट्रेंट वापस एनरिच कर सके, जो वो न्यूट्रेंट वापस उसका सप्लाई बरकरार रख सके. That means this, therefore we are going to give the preference of the crop rotation. It is the how we can improve the soil in this way. That means by crop rotation soil never become deficient of nutrients. One crop is alternatively replaced by another crop. One is the nutrient consumer and another crop is one crop is nutrient consumer, another crop is nutrient supplier. Many example they are wheat and maize. Then we should cultivate, उसके बाद हमें कल्टिवेट करना चाहे उसी जमीन पे ग्राउंड नट्स, पीस, बीन्स, दैट मीन्स they make the readily available of nitrogen in the soil. These are the leguminous plants. That my preference should be to the leguminous plant. Now B part in this is the soil improvement में mixed cropping. ये important चीज है, mixed cropping. Mixed cropping में क्या होता है, that means on the same piece of land, we cultivate two or more than two crops that have different life cycle, nutrients the different life cycle, nutrients efficient, and इनमें कुछ फ्यूचर होना चाहे. देखो इसमें मिक्सड क्रॉपिंग में क्या करता है, हम इस सेम पीस ऑफ लैंड में क्या करते हैं, इन अ सेम पीस ऑफ लैंड वी कल्टिवेट टू और मोर क्रॉप्स, two or three or four crops together in a crop in a same piece of land, ताकि हमारा टाइम भी बच जाता है और we get economically we get two types of crops. And we should give the preference of two types of crops which have same seasonal period, different life cycle, nutrient efficient, and same seasonal यही लिखेंगे हम,
सीजनल पीरियड भी होना चाहिए, जो इसके लिए कंडीशंस अवेलेबल हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक क्रॉप के लिए वो दूसरे क्रॉप में भी होना चाहिए. दैट मीन्स they should have common climatic conditions, they should common seasonal period, and they should have different life cycle. Because of having different life cycle, one crop should be cultivated first, then after some week, after some days, another crop should be cultivated on the same piece of land. Mixed cropping में क्या होना चाहिए, we make the cultivation of crop first, we make the cultivation of crop second, crop first crop second को इकट्ठे लगाते हम सेम पीस ऑफ लैंड में. अब इनमें क्या फीचर्स होने चाहिए, थोड़ा लिटिल बिट फीचर्स होना चाहिए. नंबर वन, डिफरेंट लाइफ साइकिल. दूसरा, एक होना चाहिए, दे शुड बी इफिशिएंटली यूटिलाइज द न्यूट्रेंट्स. क्या एक होना चाहिए, क्या उसमें न्यूट्रेंट मतलब अपटेक ज़्यादा, इफिशिएंसी, दूसरे में इफिशिएंसी कम होना चाहिए. क्या दूसरा, न्यूट्रेंट कंज्यूमर हो, न्यूट्रेंट अपटेक हो, उसकी मतलब इफिशिएंसी एक की अगर ठीक होगी, दूसरे की उससे कम होनी चाहिए, ताकि हम मतलब सॉइल में जल्दी से न्यूट्रेंट ख़त्म ना हो. ये चीज़ भी न्यूट्रेंट इफिशिएंट होना चाहिए. इनमें उनमें उसमें भी वेरिएशन होना चाहिए. तीसरा, सेम सीजनल पीरियड होना चाहिए, इन द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन को कल्टिवेट होना चाहिए. देन देयर इज अ पॉसिबल ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग. एंड दिस मिक्स्ड क्रॉपिंग, there is if one plant consumes the nutrient, then another plant is in a way, दूसरा crop इसमें वो सप्लाई करता है वापस, वो न्यूट्रेंट ज़ाया नहीं होता है. अगर हम बात कर लेंगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम में भी आता है, if there is a wheat plus mixed cropping of wheat plus मस्टर्ड, दोनों रॉबी क्रॉप्स है, दोनों का सीजनल पीरियड सेम है, सेम सीजनल पीरियड, डिफरेंट लाइफ साइकिल, न्यूट्रेंट एफिशिएंसी, तो इनमें ये फीचर लगभग होना चाहिए. दिस इज वन एग्जांपल फर्स्ट. देन एग्जांपल सेकंड, इन हियर इज द एग्जांपल सेकंड, मैं बताता हूँ यहाँ पे. देन एग्जांपल सेकंड, here is the example second is here, we can say gram, we take the gram plus we cultivate it, we cropping it with the barley, gram plus barley, ये दोनों, इसको ये भी सेकंड एग्जांपल है. थर्ड एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं. थर्ड इसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग में एग्जांपल थर्ड में आ सकता है. यहाँ पे ग्राउंड नट्स प्लस कॉटन, तो ये भी तीसरा एग्जाम्पल है मिक्स्ड क्रॉपिंग. हाँ, एंड इन दिस वे वी आल्सो, इफ one crop readily uptake the nutrient, then another crop is न्यूट्रेंट सप्लायर. अगर एक क्रॉप इसमें न्यूट्रेंट ज़्यादा कंज्यूम करता है, ज़्यादा अपटेक करता है, ज़्यादा लेता, तो दूसरा क्रॉप इसके कंपैरिजन में न्यूट्रेंट लेना चाहिए, बट कम लेना चाहिए. और दे शुड हैव डिफरेंट हार्वेस्टिंग पीरियड, एंड दे शुड हैव सेम सीजनल पीरियड. क्लाइमेटिक कंडीशन शुड बी कॉमन, सनलाइट, water and minerals, and sunlight, light, other space. There should be the some common features we should take. We should take the practice properly if we have a plan to have a mixed cropping. Now is this how we can improve the crops. Then is the C part, field fallow. ये भी इम्पोर्टेंट है. फील्ड फैलो में क्या करते हैं हम? फील्ड फैलो में हम इसमें कल्टीवेट कुछ नहीं करता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. मान लीजिए मंथ्स का टाइम हम देते हैं, मंथ्स का या ईयर्स का, साल भर हम क्या होता है उस फील्ड को एज विदाउट कल्टीवेशन उसमें क्या होता है, हम कुछ साल तक, कुछ महीने तक हम बिल्कुल काश्तकारी नहीं लगाते उस फील्ड में, और हम इसको ऐसे ही बंजर रहने देते हैं
for some years या for certain period of time, we then have a tilling process, plowing process, ताकि वहाँ पे हम मैन्यूरिंग डाल सकते हैं, घास फूस उगता है वहाँ पे, ग्रीन मैन्यूरिंग, we prefer to have a green मैन्यूरिंग, जो घास फूस उसमें वीड्स ग्रोथ होते हैं, फिर उसको हम टिलेज के साथ ब्यूरीड करते हैं, वो भी ऐसे आगे, ताकि इस फील्ड को एक नरिशमेंट मिल सके। हम इसको कहते हैं कि हम इसमें रेस्टिंग पीरियड दे देते इस फील्ड को, टू कीप गिवन पीस ऑफ लैंड एज आइडियल, ऐसे बेकार रखना, मतलब बंजर रखना फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट देयर शुड बी ए न्यूट्रेंट एनरिचमेंट। वहाँ क्या हो सकता है, इससे हमें क्या एडवांटेज मिल सकता है, साल भर ऐसे ही रहने देना इस फील्ड को, there is a nutrient enrichment, and there is a nutrient enrichment in soil. Now this field is sufficient, then it remains sufficient for future cultivation, for future cultivation के लिए suitable रहता है, sufficient रहता है। हमें कुछ पीरियड तक हमें ऐसे ही रखना होता है, इसी को कहते हैं हम फील्ड फैलो, FALLOW, फील्ड फैलो, टू रिमेन फील्ड्स एज यूजुअल आइडियल, सो दैट देयर इज प्रॉपर एनरिचमेंट ऑफ सॉइल, देयर शुड बी अ माइक्रोबल ग्रोथ, माइक्रोबल डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट्स, देयर शुड बी अ decomposition of manure wastes, therefore some period of इसको time लगता है इस soil को पहले fertile होने में, पहले this soil should be a nutrient rich, then it is suitable for the future cultivation. This is the importance of फील्ड फैलो। फिर हम 2 साल 3 साल के बाद या 5 महीने 6 महीने के 8 महीने के बाद हम अच्छी तरह से कल्टीवेशन कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन पे कुछ नहीं उगता हो तो यू शुड गो फॉर दिस प्रैक्टिस एंड इसको ज़रखेज़ बनाइए, फर्टाइल बनाइए। इस मेथड को हम कहते हैं फील्ड फैलो मेथड, एंड साल भर ऐसे रखिए ताकि इसमें अच्छा खासा न्यूट्रिएंट सप्लाइंग हो बाय द माइक्रोबल डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। जब भी हम अब इस जमीन को ऐसे नहीं देना, आपको जो घर से एनिमल वेस्ट निकलता है, वेजिटेबल वेस्ट निकलता है, या ग्रीन मैन्योर घास फूस जो इसमें उगता है, आपको फिर इसको जो घास फूस फिर डेड होता है, इसी में रह जाता है, इसको डिकम्पोजिशन होती है, मॉइस्चर रहता है, मतलब ये फिर ज़रखेज़ टाइमली ज़रखेज़ बन सकता है। फिर ये मतलब फ्यूचर क्रॉप, फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए ये सुटेबल रहता है दिस पीस ऑफ फील्ड। दिस इज द हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस क्रॉप, मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ द, this is all about the improvement of the crops. Now is the concept is if you have a better yield, then is the chances of the fourth is the, then fourth was storage क्या होता है, जो आपको हार्वेस्टेड क्रॉप मिला है, क्रॉप्स मिला है, अब इसको प्रॉपरली हमें क्या करना है, we should properly store it. There should be properly storage. There should be properly storage in godowns, and those godowns, those containers, those डंपिंग एरिया जहाँ पे हम इनको स्टोर कर सकते हैं, ताकि अभी हमें भरोसा नहीं है नेक्स्ट ईयर क्या रह सकता है, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, बारिश पड़ सकती है। इंडिया की कल्टीवेशन जो होती है वो ज़्यादातर भरोसा रखती है मूनसून रेनफॉल पे, मतलब इट हैज़ अ प्रोबेबिलिटी समटाइम्स फॉल्स समटाइम्स नॉट फॉल्स, तो वो बारिश जब पड़ सकती है तभी काश्तकारी लग सकती है, तभी अच्छे खासी क्रॉप प्रोडक्ट कल्टीवेशन पॉसिबल है। तो देयर शुड इंडिया ऑलवेज फाइंड in her country that shortage of food रहती है, therefore we should have a future arrangement for food, and we should avoid the scarcity of food for her country. Therefore India like country should have a much more struggle, should be empowered in this case. They should have a proper conditions, proper arrangements, proper setup for the storage of
food storage of food grain storage of harvested crops. That means our godowns, our जो area है जहाँ पे हमने store की है food grains, they should be properly managed, clean, hygienic in conditions, free from the rodents, pests, pesticides. There should be a regular checkup. There are the various pointers to discuss how we can properly maintain the godowns wherein we store the crops, foods, vegetables properly should be maintained, and in order to have a continuous constant supply of the food to the population of the country India. That means therefore we should have properly, the godown should be properly managed. There should be a chemical spray of insecticides, pesticides, rodenticides, weedicides. There should be and good ventilation, temperature, humidity, moisture content. It should be carefully have a checkup before we are going to store. There should be a proper drying process, and there are the various ways. We often feel that very difficult in the storage of the food grains, harvested crops. Therefore it is very scientific practices, scientific means and methods. We should follow up those methods, means, and ये कहा जाता है 25% of the total storage of grains are eaten by the rodents rate, and they are infected by cockroaches or mice and other insects. They are infected, and there is the chances of fungal diseases. Therefore to avoid these, there should be a proper chemical spraying. And also we should also, how to improve our crops, we should also go for the protection of crops by spraying of the pesticides, insecticides, and weedicides. These days scientific are trying very hard to have a biocides or chemicals in order to have a spray to the crops. Biocides are the chemicals produced by the living organisms. It is eco-friendly chemical, it is eco-friendly setup, ताकि आपको पता है कि ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल यूज़ करने से बार बार क्या होता है, वॉश डाउन होता है, पानी में चला जाता है, पानी हमारा पोल्यूट होता है, हवा पोल्यूट होता है, ज़्यादा स्प्रे करने से केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है, सॉइल इम्पैक्ट है, soil is polluted, water is polluted, and indirectly human is affected in a food chain. Other organisms are affected in a food chain when there is a high spraying of the DDT, BSC, malathion. These are the insecticides which we spray to our crops in order to prevent our crops from the pests, insects. There is economical adverse वातावरण खराब हो जाता है, सॉइल, वाटर, एयर खराब हो जाता है इसके स्प्रेइंग करने से, और इनडायरेक्टली फूड चेन जो होता है डिसरप्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि किस तरह हमारा ये जो एक इंसेक्टिसाइड है, डीडीटी है, किस तरह आखिरकार जो टॉप कॉर्निवर्स है वो कैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं बाय हैव एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ डीडीटी इन देयर बॉडी। दैट मीन बर्ड्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द डीडीटीज, और उनमें वो एग नहीं बनता, एग शेल नहीं बनता, और उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो डिक्लाइन होती है। देयरफॉर बैन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन एक्सेसिव यूज ऑफ द डीडीटीज, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड। देयरफॉर वी शुड हैव द preference of the biocides. What are the biocides? These are the chemicals secreted by living organism. We utilize this is the scientific research. We make the use of the living organisms. They secrete chemicals, वो act करते हैं biocides, and these living organisms help us and help in protection of crops, protection of crops को बचाने के लिए. This is the storage, proper storage of crops. Dear students, this is all about this topic, how we can improve the crops in how we can improve crops in fields. Various methods I mentioned on the board. I hope you understand about this. Thank you.